Hello guys, I welcome you all to the day 180, and in today's session we are going to complete this series of pronouns. So let's get started. And here is your yesterday's task. Here you were supposed to encircle the odd one out. So in the first one, here three words are given: restriction, compliance and constraint, and out of these compliance is completely out of the context. Next is stringent, rigorous and thorough. Here thorough is out of the context because stringent and rigorous are synonymous. Next is beam, girder and bracket. So we are going to encircle the bracket. And next one is motion, anchor or sway. Here anchor is different. Next is counteract, determine and establish. So here counteract is the odd one here. Next is withstand, resist, comply. And here comply is odd because withstand and resist are synonymous. Next is angle, concrete and steel. Angle is different. Occupant, constraint and resident. Constraint is odd one. And in the last one, panels, crane and footings. Here our answer would be crane. Now here you were supposed to write the synonyms of these underlined words. So first one is we haven't managed to determine the extent of the damage. To establish. To establish. मैं इसको फिर से कर रही हूँ, पूरी स्पेलिंग नहीं है, मैं इसको फिर से कर रही हूँ, आप लास्ट को हटा देना. So the first sentence is we haven't managed to determine the extent of the damage. To establish. Next is the building is moving from side to side. The building is swaying. Next is you can't do anything once it is in motion, once it is moving. And next is we hope the structure will be able to stand up to the pressure. The structure will be able to resist. Either you can write resist or you can also say withstand. Withstand, both are correct. And obviously stand up to is also correct. But we were supposed to write the synonyms. That's why withstand as well as resist, both are correct. Next is they hope this will satisfy the needs of the planners. They hope this will meet the needs of. And next is most architects have to operate with various financial restrictions, or I would say constraints. Constraints. Next one is basically the fence comprises 6 rectangular pieces of wood. Okay, we have a name for rectangular pieces of wood and that is panel. Panel. And here we are talking about 6 rectangular pieces. That's why we are going to write it in its plural form. Next is we need to firmly fix it to the ground. We need to anchor it. Anchor it to the ground. Next is high-rise buildings have to comply with very strict fire regulations, have to comply with stringent. Stringent. And last one is they have very thorough tests, rigorous. Rigorous. And now let's move to the next exercise, and here you were supposed to complete these sentences and ultimately completing the whole paragraph. So with a skyscraper, the effects of the wind are greater problem than the weight of the structure. So designers have to ensure that the building can dash strong winds. The building can withstand or stand up to, or you can also say resist. Resist. Next one is and will not dash enough and will not sway enough. Sway or move enough. To cause the dash physical or emotional discomfort. To cause the occupants. Occupant
occupants apostrophe, or you can say residents, and then you have to put apostrophe at the end of s. And next one is, in the design, engineers will have to dash whether, engineers will have to determine whether the steel dash are strong enough, whether the steel girders are strong enough to support the vertical dash, the vertical load. If not, engineers will have to dash the pressure, counteract the pressure of the weight. And one common method is to add more dash concrete around, is to add more reinforced concrete. Means additional amount of concrete around the supports in order to stiffen or strengthen the central core of the building. And now let's move to another exercise. Here you were supposed to connect these two given sentences into one, making it complex sentence by using these relative pronouns. So first one is already given. A girl was injured in the accident. She is in a hospital now. So the girl who was injured in the accident is now in hospital, and you are supposed to follow the same pattern. So a waiter served us, and next statement is, he was impolite and impatient. You can say that the waiter who served us was impolite and impatient. Next is, the building was destroyed in the fire and it has now been rebuilt. So the building that, or you can also use which, that or which was destroyed in the fire. I'm writing it down. In the fire has now been rebuilt. Here we can either write it or write that or which. Next one is, some people were arrested. They have now been released. So you can say the people who were arrested, and after that you can say have now been released. You can write it from here, have now been released. Next is, a bus goes to the airport. It runs every half hour. You can say the bus that goes to the airport runs every half hour. So now let's move to the next exercise, and here you were supposed to choose your phrases from this box. The first one is given. Helen works for a company that makes furniture. Next is, the movie is about a girl who runs away from home. Next is, what happened to the pictures? Either you can say that or you can use which. So which were hanging on the wall. Next one is, a mystery is something that or which. So a mystery is something that cannot be explained. Next one is, I have heard it is a good hotel, but I don't know anyone who, because here we are talking about a person, anyone. So anyone who has stayed there.
who has stayed there. Next is history is the study of things that or which happened in the past. Happened in the past. Next is Albert Einstein was the scientist who developed the theory of relativity. So here is the answer. Next is it seems that Earth is the only planet that, and here because of the only we have to use that, so that can support life. Can support life. Now let's move to the next exercise. This is your last exercise of today's session, and here you were supposed to check the sentences whether they are correct or incorrect. If they are incorrect, then you were supposed to rectify these statements. The first one is given, although half given. So I don't like stories which, or you can also use that have unhappy endings. Next is what was the name of the person who phoned? This one is correct already. Next is where is the nearest shop that or which sells bread. Next is Dan said some things about me, they were not true. We have to eliminate this word they if we are using some kind of relative pronoun. So things about me, that or which were not true. Next is the driver which caused, who caused. The accident was fined. Do you know the person that who took these pictures? We live in a world. What is changing? Not what. That is changing all the time. Next is Gary apologized for what he said, and this one is correct. What was the name of the horse? What won the race? That won the race. Or you can also use which. But remember, you cannot use who, because who can only be used in case of people. Not even in case of animals, just people. So now let's move to the pronouns part, and in today's session we are going to cover this relative pronoun also. Well, as we have discussed earlier also, in case of I guess interrogative pronouns, and here I told you that these pronouns whatever, wherever, whatsoever, whichsoever, these can either be used as interrogative pronouns or as relative pronouns. So here in today's session, in this particular slide, all of these pronouns are used as a relative pronoun, means they are not asking any questions here. They are just relating the statements, they are just connecting the earlier part of the statement to the latter one. So let's take the very first example. Take whatever you want. Here whatever means anything that you want. So whatever is just connecting the two parts of a sentence. Next is I often think about where I met you, and from where we are supposed to talk about the place where we met. Next is we have bought a cottage in the country. By this phrase in the country, the writer wants to say that in the rural area. Rural area. We often use this phrase to show rural area. Next is for when we retire. Next is whenever you want to come is fine with me. Means any day that you want to come would be fine with me. Next is look at how he treats me. Look at the way in which he treats me. तो यहाँ पे जितने भी हमारे WH फैमिली के वर्ड्स थे, ये सारे क्वेश्चन के लिए नहीं यूज़ किए हमने, ये सारे सिर्फ हमने रिलेशन बताने के लिए यूज़ किए थे. नेक्स्ट में आते हैं द ऑल्डर हु एंड दैट विच. अब यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन है शेक्सपियर के राइटिंग में, शेक्सपियर के वर्क ओथेलो में से. हु स्टील्स माई पर्स स्टील्स ट्रैश. तो वहाँ पे मीन्स बिल्कुल प्योर इंग्लिश होती थी उस टाइम पे, तो सिर्फ हम हु यूज़ कर रहे थे. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप हु एवर, हुम सो एवर, यहाँ पे आप बीच में सो भी इन्वॉल्व कर सकते हो, हु सो एवर, एनीबडी हु, आप इस तरह के फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हो. स्टील्स माई पर्स स्टील्स ट्रैश. नेक्स्ट इज दैट विच.
अब जैसे यहाँ पे देखिए ये फिर से अगेन शेक्सपियर के प्ले में से ही उठाया गया है, वी हैव दैट विच वी नीड। और अभी हम दैट विच को इतना फॉर्मल हम नहीं बोलते, अब हम सीधा व्हाट को यूज़ करते हैं यहाँ पे, वी हैव व्हाट वी नीड, कि जो हमें चाहिए था वो हमारे पास है। और अभी आते हैं हमारे कुछ क्वांटिफायर्स या फिर आप सिंपल ऐसे कह सकते हो जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में किए हैं, नन ऑफ विच, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो वहीं पे हम मैनी, अ फ्यू, लॉट्स इनको भी यूज़ कर सकते हैं। दो की अगर हम बात करें, टू ऑफ विच, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हैं तो अ नंबर ऑफ, और आधे के लिए हाफ ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, द यंगेस्ट ऑफ होम, अगर हमें एज की बात करनी है, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, अगर सिबलिंग की बात करें तो द एल्डेस्ट, और मैनी ऑफ होम, सम, कुछ की बात करें तो सम ऑफ होम। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ एक सेंटेंसेस देखेंगे। दे पिक्ड अप 5 boats ऑफ रेफ्यूजीज, सम ऑफ होम, तो यहाँ पे रेफ्यूजीज की बात हो रही थी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर होम। सम ऑफ होम मीन्स सम ऑफ द रेफ्यूजीज हैड बीन एट सी फॉर सेवरल मंथ्स। आप ये भी यूज कर सकते थे ऑफ होम सम, वो भी इक्वली करेक्ट होता। नेक्स्ट है जैसे दे हैव गॉट 8 children, ऑल ऑफ होम मीन्स ऑल ऑफ द चिल्ड्रन are studying music. She had a teddy bear, both of whose eyes were missing, कि उसकी दोनों आंखें नहीं हैं। Next है we have tested 300 types of boot, none of which, अब यहाँ पे क्योंकि boot की बात हो रही थी, material की बात हो रही थी, that's why we have used which is completely waterproof। और यहाँ पे हमने is को यूज़ किया क्योंकि हम पहले देख चुके हैं none, neither, ईदर, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है शी हैज़ 3 brothers, 2 of them are in the army, 2 of whom। नेक्स्ट है I read 3 books last week, okay, if we are talking about last week, in that case it would be I read, not I read, so I read 3 books last week, one of which I really enjoyed। अब आप यहाँ पे वन ऑफ होम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम बुक्स की बात कर रहे हैं, तो आप वन ऑफ दैट भी आप यहाँ यूज़ कर सकते थे, वन ऑफ दैट और वन ऑफ विच आई रियली इंजॉयड। देयर वर सम गुड प्रोग्रामर्स ऑन द रेडियो, नन ऑफ विच आई लिसन्ड टू। ओके, ओह गलत बोल गई फिर से। नेक्स्ट इज देयर वर सम गुड प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो, none of which I listened to। And here as we are talking about programs, that's why we have used which. You can also have used that. So none of which, none of that I listened to, and to is a fixed preposition with this verb listen. Next is Helen has 3 brothers, all of whom are married. They asked me a lot of questions, and for questions we have used which I couldn't answer, or most of which I couldn't answer. Martin tried on 3 jackets, and because of jackets we have used which, because we are talking about non-living things here, none of which or none of that fitted him. Next is 2 men, neither of whom, we have used whom for men, neither of whom I had seen before came into the office। अब यहाँ पे आप इस फॉर्मेशन को देखिए, 2 men came into the office, एक सेंटेंस ये हो गया। और नेक्स्ट ये है कि मैंने उन दोनों में से किसी को नहीं देखा था इससे पहले, तो neither of whom I had seen before, I had seen neither of whom before। और इन दोनों को जब हमने कनेक्ट किया तो अब देखिए 2 men, और इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जस्ट इसके बाद में ही दी है हमने, और उसके बाद में हमारे बचे हुए सेंटेंस के पार्ट को हमने कंप्लीट किया यहाँ। नेक्स्ट है दे हैव 3 cars, 2 of which they rarely use। अब 3 cars के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है कि इनमें से जो 2 हैं उनको वो बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज Sue has a lot of friends, many of whom she was at school with। कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि उनमें से बहुत सारों के साथ में वो स्कूल टाइम से थी, स्कूल में भी थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
यू कैन ऑल्सो से द कॉज ऑफ विच, आप इस तरह से भी बोल सकते हो द कॉज ऑफ विच, अगर आपको पर्टिकुलर कॉज गिवन है वहाँ, जैसे यहाँ देखिए द हाउस वॉज डैमेज्ड इन अ फायर, द कॉज ऑफ विच वॉज नेवर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि उसका कारण जो है वो नहीं पता चला। अब द कॉज ऑफ विच ये भी कह सकते हो, और द रीजन ऑफ विच ये भी आप यूज कर सकते हो, वॉज नेवर डिटरमिन्ड। नेक्स्ट इज वी स्टेड एट अ ब्यूटिफुल होटल द नेम ऑफ विच आई डोंट रिमेंबर नाउ, means I don't remember the name of the hotel in which we had stayed. And here comes the part of vocabulary. Here we are going to talk about prefixes, and prefixes always comes before a word. ये हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इनमें काफ़ी सारे वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं तो इस वजह से इनको हम फिर से देखेंगे। तो पहला प्रीफिक्स है हमारा मिस। मिस को जब भी एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाए उसका मीनिंग हो जाता है बैडली या रॉन्गली, गलत तरीके से या बुरे तरीके से। तो अब जैसे देखिए मिस कैलकुलेट समथिंग, कैलकुलेट करना, किसी का अंदाजा लगाना, टू एस्टिमेट समथिंग, लेकिन मिस लग गया दैट मीन्स उसको गलत तरह से एस्टिमेट लगा लिया है उसके बारे में। मिस कैलकुलेट अमाउंट और टाइम दोनों के केस में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन। देखो तो ये वर्ड बना है एक कॉन्सेप्ट से, कि कोई कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमसे गलत अंदाज़ा लगा लिया गया है। तो कोई आइडिया है हमारे माइंड में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि वो जो आइडिया है वो इसको फिर से करते हैं मिसकंसेप्शन को। इस वर्ड को फिर से ही करते हैं। नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन। ये बना है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट यानी कि हमारे माइंड में कोई आइडिया है या फिर हमारा कोई कॉन्सेप्ट है वो गलत है, मीन्स वो करेक्ट नहीं है, वो फैक्ट बेस्ड या करेक्ट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं है। मिसकंसीव्ड, कंसीव का भी मीनिंग यही है कि कोई आइडिया है उसको हम समझते हैं, कंसीव करना मीन्स हमारे माइंड में उतार लेना, उस चीज़ को समझना। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ मिसकंसीव्ड यानी कि कुछ गलत समझ लिया गया है हमारे द्वारा, और इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं मिसकंसीव के लिए, मिसइंटरप्रेट। मीन्स हमने गलत इंटरप्रिटेशन लगा ली है उस चीज की। मिसप्रिंट, अब प्रिंटिंग के टाइम पे जो गलतियां होती हैं उनके लिए मिसप्रिंट यूज कर लिया जाता है। मिसजज यानी कि जजमेंट में हमसे कोई गलती हो जाए किसी के बारे में तो वहां पे मिसजज कह लेते हैं। मीन्स किसी पर्सन को समझने में हमसे गलती हो जाए वहां पे मिसजज हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है मिसफायर। मिसफायर ये एक प्लान के केस में या जॉब के केस में हम यूज करते हैं मिसफायर, यानी कि वो सही डायरेक्शन में नहीं गया, उसमें गड़बड़ हो गई, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसे नहीं रिजल्ट दे पाया। नेक्स्ट है मिसडायग्नोज। अब अगर डायग्नोज हुआ है दैट मीन्स कोई बीमारी थी आपको तो उसके बारे में डॉक्टर ने आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम है आपके साथ में, ये इशू है आपके साथ में, लेकिन मिसडायग्नोज यानी कि टू बी रॉन्ग अबाउट व्हाट इलनेस समबडी हैज़, कि मिसडायग्नोज किसी की जो बीमारी है उसका एस्टिमेशन जो है या फिर उसका जो एनालिसिस है वो करेक्ट नहीं हो पाया। मिस इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दे दी गई है आपको, यानी कि आप मिस इन्फॉर्म्ड हो गए हो किसी चीज़ के बारे में। मिसमैनेज, मिसमैनेज या मिस हैंडल ये सिनोनिम्स हैं दोनों। किसी चीज़ को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे हम मिसमैनेज या मिस हैंडल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मिसले समथिंग। मिसले समथिंग यानी कि कुछ समय के लिए किसी चीज़ को गुमा देना, यानी कि कोई चीज़ गुम हो गई हमारी कुछ समय के लिए या फिर हम कहीं पे रख के भूल गए हैं उसको, मिसप्लेस। तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं, मिसप्लेस और मिसले। नेक्स्ट है मिसट्रीट, किसी को बुरी तरह से ट्रीट करना। नेक्स्ट प्रीफिक्स हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाएगा हमारा इंटर। इंटर यानी कि अगर दो लोगों की बात है तो बिटवीन हम यूज़ कर देंगे। अदरवाइज़ ये है कि मतलब जितने भी लोग हैं उनका आपस में जो उनका इंटरेक्शन होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इंटर। फर्स्ट वर्ड यही है इंटरेक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी जो काफ़ी सारे लोगों के बीच में होती है, इंटरेक्शन, स्पेसिफिकली टॉकिंग, कोई मीटिंग हो गई। नेक्स्ट है इंटरेक्ट। अच्छा, इंटरेक्ट इसके लिए वर्ब हो गई हमारी। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पे निर्भर रहना, तो इंटर लग गया तो लोगों की बात हो गई यहाँ पे। इंटरडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है।
रिलेटेड जुड़ा हुआ, और इंटर रिलेटेड की आपस में एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं, वो हो गया हमारा इंटर रिलेटेड, सभी की बातें एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है इल। देखिए इल वैसे तो एडवर्ब होता है, लेकिन इसको हम प्रीफिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे इल इन्फॉर्म्ड। इन इन्फॉर्म्ड यानी कि आपको किसी चीज के बारे में भटकाया गया है, आपको मिस इन्फॉर्म किया गया है। तो मिस इन्फॉर्म, इल इन्फॉर्म्ड, ये आप दोनों सिनोनिम्स में कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है इल प्रिपेयर्ड, कि प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन वो हो नहीं पाई, बुरी तरह से प्लानिंग की गई है, बुरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है चीज़ों को, इल प्रिपेयर्ड। इल ट्रीटेड यानी कि बुरी तरह से ट्रीट किया जाना, इल ट्रीट, मिस ट्रीट, इनको आप सिनोनिम में यूज कर सकते हो। लास्ट है इल एडवाइज्ड, कि कोई सेंसिबल एडवाइस नहीं दी गई आपको, जिसका कोई बुरा इफेक्ट हो सकता है क्योंकि बुरी एडवाइस दी गई है आपको, इल एडवाइज्ड, यू आर इल एडवाइज्ड। इसके अलावा इल विल। इल विल किसी के बारे में बुरा सोचना, कि इसके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए वो सोचना, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इल विल। अब इनको यूज कर लेते हैं एक बार, कुछ एक वर्ड्स को। प्रोफेसर मॉर्टन्स लेक्चर वॉज टेरेबल, ये प्रोफेसर मॉर्टन के लेक्चर की बात हो रही है। ही मिस कैलकुलेटेड द टाइम, कि टाइम का उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया, अच्छे से मिस कैलकुलेट कर लिया। इट वॉज फुल ऑफ मिसकंसेप्शंस, पूरा वो काफ़ी फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है उसका भरा हुआ था उनका लेक्चर। हिज हैंड आउट वॉज फुल ऑफ मिसप्रिंट्स, जिसमें से वो पढ़ा रहे थे वो हैंड आउट, उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी, मिसप्रिंटिंग थी। ही मिसजज्ड द ऑडियंस, जिनको वो पढ़ा रहा था उनको लेके उनकी जजमेंट अच्छी नहीं थी। देयर वर नो इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। हिज जॉक्स कम्प्लीटली मिसफायर्ड, और उसने जितने भी जॉक मारे वो सारे नहीं चले, पूरी तरह से वो नहीं चले, फेल हो गए। ही वॉज इल इन्फॉर्म्ड एंड इल प्रिपेयर्ड, कि उसको ना ही अच्छे से इंफॉर्मेशन थी और ना ही उसकी प्रिपरेशन अच्छी थी, इस वजह से ये सारा ब्लंडर हुआ। तो अभी आते हैं हमारे टास्क पे, आपको इन्हें फिल करना है, और इसके अलावा यू हैव टू रिवाइज द वर्ब्स। वर्ब्स जितनी भी हमने की हैं अभी तक, इन्फिनिटिव हम कर चुके हैं, जेरंड कर चुके हैं, हाँ बेसिक है जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उनको ज़रूर एक बार रिवाइज करना। सो गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।